Yes, ma'am. Good afternoon to all. Respected Principal Dr. G.D. Giri, Head Department of Botany, and Chairperson of Nature Club Dr. Shilpi Vikastutia, Honorable Guest Speaker Chaula Solanki, Zero Waste Activist Cheerful Chaula, India Ki Zero Waste Saheli, faculties, students, and dear participants. I, Dr. Sashikala Prajapati, welcome you all on this e-platform for the second day workshop on behalf of Kelly Society's Science and Commerce College, Kalamboli, for 2 days workshop on waste management, Zero Waste College. With Principal Sir's permission, I request our guest speaker, Chawla Solanki ma'am, to start with the workshop. Now the dais is yours. Thank you Chawla so much. Solanki ma'am. Thank you so much, Shashikala ma'am. Thank Thank you. you, KLE Society College. Yeah. Welcome all participants. Yeah. So we'll start with today's session, which is on startups. But before that, I would just like to know how much you remember from yesterday's session. So a few question and answers, right? So whoever feels they know the answer, please give the answers. Okay. So if you have some injections, many people take injections at home, right? So if you are taking an injection at home, so where will you put that needle and how will you put? In which waste it will go? And how will you dispose it of? Anyone? In cross box. Pardon, ma'am? Ma'am, in a box which is having a red color cross. Correct. Yeah. So, and needle is a sharp object which can harm anyone. So we have to make sure that it won't prick anyone. So we may put it into a plastic container, which is a thick one, or we wrap into a some paper kind of cardboard so that it won't harm anyone, and put cross over it, and then put into dry waste bin. Correct. Perfect answer. Yeah. Okay. If we have some such earphones which are not working. Like yesterday when I was practicing, I noticed that one of my earphones was not working. So if I need to put that into the waste, in which waste bin I will put? E-waste. E-waste. Perfect. Yeah, because it's an electronic waste. It is an electronic device. Okay, perfect. Uh, and see, many of us now started wrapping our rotis and chapatis into aluminum foil. Okay, so you took it to your college or anywhere, yeah, the dabba, and a few pieces are left over chapati, and along with the aluminum foil. So how will you dispose it of? Wet and dry both. Wet and dry both. Correct. Which one is wet and which one is dry? Green one is wet and the blue one is dry. Yeah, correct. But chapati and aluminum foil. Chapati will go in wet Correct. and the blue one, that foil will go in dry. Perfect. Yeah, many times this happens that because it is in a common box, so people generally put it into wet waste bin, and it is very difficult to segregate the small pieces later on. So this is perfectly how we should go about it. Okay. Now I would request someone else also to come up and answer. Meena ji has answered so many questions very nicely and perfectly. Uh, so if you have that tetra pack of milk or juice or anything, how will you dispose it of? No one? Again in dry. Yeah, correct. In dry waste. But how? We have to clean and then. Yeah, correct. Yeah, the inner part which is having milk or juice or anything, you have to put some water, rinse it thoroughly, and then put it into dry waste bin. Correct. Yeah. And where we will put our all washing machine filter we are cleaning, right? Occasionally in once a week or so. So where we'll put all those dusty parts? In which Black waste? one, black box. Black box, that is reject waste. Yes.
Correct. Yeah. Perfect. Perfect. So I think all of us have understood this, and if your answers are also matching with these, then you understood the yesterday's session perfectly. And segregation of waste into 5 types. Okay. So I hope once you start practicing, many of you must be doing this also earlier. And once you start practicing, it will be the habit, and it will be very easy then later on once you practice. Okay. So our today's session is about startups. There are so many startups nowadays have popped up, and for so many years, I feel around 2014-15 से बहुत सारे eco-friendly चीजों के लिए startups नए शुरू हुए हैं इंडिया में and across the globe also. And many of you must be watching Shark Tank India, the TV program, which is very famous. So there are also many startups related to these waste and eco-friendly products are coming nowadays. Like you might have seen Scrape Shala, then Bamboo India. These two startups have come into Shark Tank India, right? Anyone is aware? Yes, yes. Yeah. Okay. So Yes. yeah. Okay. So I'll start with a question that paper, how it is, how differently the paper is produced, like from which all products, which all base material paper can be produced. Plants. Plants, that is trees, correct. That is a common, generally what we know, that it is made out of trees by cutting trees. What else? Yeah, nowadays recycle paper means old paper we recycle and then again produce the paper. Correct, yeah. So the paper is recycled and again the paper is made out of it. It is not quite white as we get the fresh paper. It is a little yellow in color, the recycled paper. So many people are not using it, like they feel the yellow is not good. But yellow is actually good. Once we start using the recycled paper products, no, the price range will also go down and it will be very much useful. And all paper should go into recycle. Okay, but my question is still there. Apart from trees, from which all items you feel paper can be produced? Grass and rag cloths. Uh, Grass, Cloths. yeah, cloth also and grasses fibers also can be used. Grasses, that is Okay, agricultural waste. agricultural waste. Yeah. Any specific example of that agricultural waste from which paper can be produced, ma'am? See, after the grains are harvested, probably Hmm. some of the grasses where the fiber is good enough to be binding, that Okay. can be used in making handmade papers can be made in that. Yeah, 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 but correct. Handmade. banana can be used. Banana fiber. Perfect. Yeah. Perfect. Yeah. The banana stem. Yes, Tim. We know, like once banana is ripened, the whole stem Yeah. it is a waste product, It like actually. agricultural waste. So out of that banana stem, paper can be produced, like banana fiber. They are very having very good qualities, and Mhm. not only paper, many other things like sanitary pads are produced, and diapers are made out of banana fibers, which can be biodegradable into just 200 days, Yeah. unlike our regular sanitary pads and diapers, which takes around 500 years to decompose. Hmm. So banana is a very good fiber, banana stem. So yeah, that answer is correct. Apart from trees, we get fiber and paper from banana stem. What else? Cotton, jute, and flax also. From Uh, sugarcane trash also. Sugarcane trash, yeah, sugarcane trash. We know some paper plates, etc., are made. Use and throw plates, etc. Yeah, correct. And anyone aware that paper can be made out of elephant poop? No. No, there is one startup in Sri Lanka, if I recall correctly.
that because elephants eat mostly like plants, correct? So that fiber goes into their poop, and that poop is recycled, and papers are being produced, and it's a very huge startup now. So just can we imagine some such thing can happen? This like this kind of innovative ideas are being put into practice by so many people across the globe. So we can think quite different than what we generally know, that paper is made out of trees and this is what. But paper can be made out of bamboo also. Bamboo is also a type of grass. It is not a tree. You all might be aware, it takes a very short period to grow, and uh, further it takes very less water also to grow, and so it comes into grass category. So cutting bamboo won't harm any forest. So deforestation को रोकने के लिए bamboo is a very good plant. So उसमें से भी पेपर बनाए जाते हैं. जैसे वी नो टिश्यू पेपर वी यूज फॉर सो मेनी थिंग्स, use and throw mostly, then wipes, etc. So those are also made out of bamboo products, bamboo fiber, and which are reusable. So bamboo के साथ भी पेपर बनता है, elephant poop से भी पेपर बनता है. Isn't this amazing? Like we sometimes never know many such things that can be made. Yes, ma'am. Yeah, correct. Yeah. So I'll ask a few names of new startups. So let me see how many of you know already about those, or having any idea about those startups. Okay. Eat Raja. Eat Raja is the name of the startup. What is that? Anyone aware of this Eat Raja shop? The same you were talking about, that elephant's poop is used for making this paper. The same? No. It's not the same. This is different. Okay. Eat Raja, anyone? There is so much in news also. It was a little while earlier. This startup was in media also. Famous. No idea, anyone? Young generation? मैम Yeah? Imran. मैम वो यूट्यूब पे देखा था कि वो नारियल नारियल मतलब नारियल में मलाई निकाल के फिर नारियल में जूस बना के उसमें सर्व करते. Perfect. Yes. That Eat Raja is a juice shop which serves the juices without any container. So they use the fruit peels only to serve the juice. Like orange peels के अंदर orange juice, pineapple peels के अंदर. So very innovative idea of not generating any waste while serving for the people. Correct. So that is good. You know about it. Very nice. Okay. Now, anyone heard the name Re Charkha? Charkha everyone knows, right? With Gandhiji's grace. Okay, I think Re Charkha no one is aware about. Re Charkha is a startup which is using all the multi-layer packaging plastic waste like Maggi wrappers, all the chips packets, etc., which are multi-layered, and generally it doesn't get recycled. So the Re Charkha is using charkha to create fabric out of it, out of these plastic waste, and then they prepare some good products out of it which can be used. So in that way they are upcycling the plastic waste. So Recharkha, Ecokari, both are the same kind of startup. They are using all these things. Okay. Now, anyone heard name Vula tree? Vula tea. There must be something related to tea. Can someone guess?
No, ma'am. No response. Okay, yeah. See, we all know about tea bags, right? Tea bags are made from the plastic packaging mostly, and when we dip the tea bag into tea, so many microplastics go into our tea, and it's very harmful for our health. Still, we keep on drinking tea made with tea bags. So this Wula Tree has is a new startup. They have eliminated the plastic packaging from the tea, and they have used a cotton thread to tie the long tea leaves, and they made a innovative product, and they've also patented this, and it's a very good startup. And we can now, after using the tea bag, we can compost the whole thing in our mm, we can say the pot we are having, so we don't generate any waste, and the tea is excellent quality. So that is Hula tea. So this kind of startup they are familiar with, and they have done this. Okay. Anyone aware about Robin Hood Army? Yes, I am aware. Okay, what is it? They collect leftover food from you Hmm. and distribute to the needy ones. Yes, correct. So mostly generally during the weddings and parties and any functions, or even from household, many times we have so much leftover food which is still good and reusable. So Robin Hood Army is a new setup that where people collect and distribute to needy. So in a way they help us reduce our food waste and feed the hungry people. So in many cities, Robin Hood Army is present. So whenever you have any such occasion, you can contact them and use the services. Okay. So okay. Now anyone is aware of begin with flowers? Begin with flowers. So what kind of startup it can be? No idea? Anyone? They pick flowers from from pandals or from the religious places and Hmm. utilize it. Yes, correct. Yeah, they collect used flowers from any like temples and decorations and all other things, and then they prepare various. They upcycle the used flowers and prepare agarbatti, then scents, holy colors, etc., dyes, etc., many other products out of those upcycled flowers. So they, Especially the soaps are very popular. yes, Natural yes. soaps. Yeah, correct. So natural soaps, so all nature made from natural elements and upcycled flowers. So no harmful chemicals and nothing. So these are all, and mostly all the startups that I discussed are started by very young people. Like most of us all are in the audience today. So many young people are starting with many such innovative ideas. Okay, now these are a few examples I told about startup. But now there are some systems like where people are also earning money and while they are serving the other people. Okay. So let me begin with a few things where yesterday we left one program, Zero Waste College. Okay. So I'll briefly describe how you can achieve that and with the new startup ideas. Okay. So what happens generally whenever we have some party at home or some gathering? So generally we use the styrofoam plates, thermocol plates, or paper plates. Or nowadays people are little more aware, so they are using those sugar papers plates made out of sugarcane leftover, etc., which are biodegradable. So this kind of things is creating a lot of impact on pollution and environment, because whatever food is left on the plates, it's all going to the dumping site, and animals eat out of those, and those styrofoam and plastic go into their stomach. And apart from that, it is also creating lot of flies, and so many diseases are spread with all those waste items. So if
some startup can be made like this, that people are providing with the uh, reusable steel plates or any other types of plates which people can use for their parties and then give it back. Okay, so that kind of startup is also very popular, and at many places rent cutlery like that. There are many startups. So in our colony where I stay, also a few people have started this. But sometimes what happens that we don't have the backup with all these things. Like, see, if someone rents the item, but who will wash it? Correct. The main problem, all ladies here are knowing that the main problem with all these things is then who helps at home and who will or do all the cleaning, etc. And that becomes a headache again for mainly the ladies. So generally they tend to use the use and throw कि चलो ठीक है हो गया खत्म होने के बाद फेंक दो, which is not good at all. But still, because there are no practical solutions for this, that even if you rent sometimes you don't get proper cleaning solution. So a very good startup can be made. Even it can start with small scale, but it can go to very high scale also, depending on your capacity to take it further. So one if plans, they can provide party solution, zero waste party solutions, correct? So in which they can provide all these things so that people need not buy anything which can generate waste. Okay, so they can also think of including cleaning in it, so that the person who is holding the party can get the full like turnkey project are there no in our industries. So just you have to need the turn the keys to open the project. So like that, if someone can give that solution, that they just need to call that person and everything will be available. So people are wanting the services and they are ready to pay for it. But people like us need to find the need of the people, that what is the exact need of the people, and we have to fill the gap. Because what happens that even at community level we tried so many times that we organize such zero waste parties. So we ordered the plates from outside. We arranged the maid. One day I recall that the maid did not turn up. Okay, so we had community gathering at our building. We arranged for plates, vatis and all, and somehow the maid did not turn up for half an hour. So we all were like in panic that now what will happen? Like if the maid doesn't turn up, who will wash the plates and who will give back? So then so because all these practical issues, we generally tend to then take up the easy solutions which are polluting environment. So if one can give the easy solutions like our caterers and mandap contractors, etc., they can add this new idea in their kitty, or people like you like us can start this at small scale building level pay. People can gather all these things and use and throw. And also along with these services they have to put the cleaning solutions ready. Okay, who will clean it? And that kind of hassle people don't want. So people want easy solutions. So if you provide a package that plates भी है, साथ में cleaning करने वाला भी है, उसको लेके जाने वाला भी है, तो people are ready to use like anything. People are demanding, but because of all these issues they feel sometimes that नहीं करना चाहिए, ठीक है कौन करेगा ये. But धीरे धीरे जैसे if such startups are there, people are giving such solutions, people are ready to use it. Just like we might be knowing that earlier there was no facility available. Now household cleanups के लिए भी जैसे अर्बन कंपनी है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना जो लोगों की रिक्वायरमेंट को उन्होंने एनालाइज किया कि लोगों को घर बैठे घर साफ हो जाए, ज्यादा कुछ करना ना पड़े. हर चीज का सॉल्यूशन है. फ्रिज क्लीनिंग के लिए लोग आते हैं, अलमारी के लिए, सोफा के लिए. सो लाइकवाइज ये जीरो वेस्ट पार्टी सॉल्यूशंस भी ना एक बहुत अच्छा स्टार्टअप हो सकता है. और उसका जो आउटरीच है ना, वो मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब, क्योंकि वो बहुत इन डिमांड है. और अभी तो क्या है कि आप कचरा जनरेट कर रहे हो तो फेंक रहे हो, कोई पूछ भी नहीं रहा है. बट लेटर ऑन सिचुएशन इज गोइंग टू वर्सन.
और तब ऐसा होगा कि आपको कचरा जनरेट करने पे आपको कुछ पैसा भी देना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब ये हालत आएगी ना, तो पीपल विल टेंड टू लुक फॉर बेटर सॉल्यूशन, जीरो वेस्ट सॉल्यूशन। तो तब आपकी ये स्टार्टअप्स बहुत ज्यादा काम में आएंगे। Just like this, I recall another startup who helped to plan zero waste uh, functions like marriages, etc. So zero waste planners, party planners. So like that is on big scale. Already a few are in existence, but it is not very cheap compared to our regular. Someone is presenting by mistake. Okay. So Ashish Chaudhary, can you please stop presenting? Mr. Ashish Chaudhary. okay, yeah. So this kind of zero waste marriages are there, zero waste functions are there. So that kind of startups are very much in demand. Okay, so this is one. The another issue is that biomedical waste, correct? See, these are all very basic ideas, but it can go up to any extent once we understand the issue and implement. Okay, like so many ladies are working nowadays, correct? There are so many educated women who go outside and work full day, so their children go to babysitting and crèche. Okay, so you all can come up with the idea like zero waste babysitting or crèche, where you can pull in the talent of your dadis and nannies. Okay, they used to raise the children, they used to potty train them very fast. उनके पास एक मेथड रहता है कि जिसकी वजह से बच्चा जल्दी जल्दी वो करना सीख जाता है। सो आप उनके टैलेंट को, उनके मेथड को ग्रैब करके वो सिखाने के लिए एक पर्टिकुलर सेटअप बना सकते हैं, ठीक है। और जैसे ओयो होटल्स है, जैसे होता है ना कि एक पर्टिकुलर सेटअप है ये सब, तो वो आपके साथ टाई अप है कि दैट इज अ ओयो होटल, तो उसका एक नाम है, ब्रांड नेम है। उसी तरह से आप ऐसे क्रैच सर्विसेज शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आप वेस्ट तो डायपर यूज किए बगैर आपका मतलब जो भी बच्चे आते हैं बेबी सिटिंग में, वो सारे बच्चे वहाँ फुल डे रहेंगे। दे विल बी गेटिंग पॉटी ट्रेन वेरी फास्ट with the trained staff working in the crèche or babysitting, and eventually the parents who are sending the children to babysitting, they will also be benefited because their money they will spend in 2-3 years for purchasing diapers will be totally free. Like they will be having better services and environment pollution भी बहुत कम होगा इससे, क्योंकि डायपर जो होता है ना उसको डिकम्पोज होने में 500 से भी ज्यादा साल लगते हैं। सोचिए एक ही डायपर, तो ऐसे डेली कितने सारे बच्चे और कितने सारे डायपर्स यूज करते हैं। तो बिकॉज ऑफ कन्वीनियंस डेफिनेटली दैट थिंग इज बीइंग यूज्ड, लेकिन उसको मिनिमाइज करके और फाइनली रिड्यूस कैसे करना है, ये समहाउ वी हैव टू वर्क नाउ। क्योंकि इसी तरह से अगर चलेगा तो वन डे द डंप यार्ड विल कम टू अवर बैकयार्ड. So that is going to happen soon, the way the rate at which we are generating so much waste. तो इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं, एंड अगर कोई महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फॉलो करता है ट्विटर पे, कोई करता है? एनीवन फॉलोज MPCB on Twitter? No? Okay. You can follow because that is pollution control board. ओके, सो उनका जो न्यू ईयर का ट्वीट था ना, फर्स्ट ट्वीट कि 2022 व्हेन इट गॉट स्टार्टेड, देयर फर्स्ट ट्वीट वाज जीरो वेस्ट हीरो, लाइक जीरो वेस्ट से आप हीरो बनो एंड पॉल्यूशन को कॉम्बैट करो. सो दैट वाज द ट्वीट. सो जीरो वेस्ट इज नाउ इन फैशन एंड क्वाइट अ लॉट इन फैशन. सो एनीथिंग यू टैग विद जीरो वेस्ट, इट विल बी sold very nicely. So you have to think out about the ideas and how to execute and how it will be useful to the community and society at large. So start with small scale. आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं with an idea and you can go up to any limits.
किसी ने MBA चाय वाले का नाम सुना है? यस मैम। MBA चाय वाला, करेक्ट। वो बहुत फेमस भी है, यूट्यूब पे भी है उसके काफी सारे यस, वीडियोस एंड इंस्टाग्राम में 7 लाख फॉलोअर्स हैं। 7 लाख, करेक्ट या। सो MBA चाय वाला ने कैसे स्टार्ट किया था? यू नो ना अबाउट हिम, बताइए। जब स्टार्ट किया था उसने, तभी उसके बहुत मजाक उड़ाते थे, मतलब हाँ, उसके दोस्त लोग, कि करेक्ट। क्या चाय बनाता है, कैसे ये वो। लेकिन उसने उसको खुद एक, अपने हाँ, ऊपर भरोसा था। सही है, करेक्ट। उसने सिर्फ एक चाय के ठेले से अपना काम शुरू किया था, और वो भी माँ बाप को बताए बगैर। उसको MBA करना था IIM में, ठीक है। तो एम वैसा उसका ड्रीम था, और उसने ये चाय का ठेला शुरू किया, मुझे कुछ करना है। तो देन अभी वो कितना पॉपुलर है, मतलब कि उसने काफी सारे चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स जैसे होते हैं ना, वैसे चेन शुरू की है। सो देयर इज नो लिमिट टू योर ग्रोथ फॉर एनीथिंग। जो भी आप कर सकते हैं उसको एक एक प्रॉपर चैनल में, क्योंकि वो वेदर इट इज नीड ऑफ द पीपल, और वो नीड तो है ही लोगों की, वेस्ट कम करना है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है, पॉल्यूशन भी नहीं चाहिए सबको, तो उसमें ये सारी चीजें बहुत ही यूजफुल है। एक स्टार्टअप है जो पॉल्यूशन जो होता है ना, उससे उन्होंने लिखने के लिए इंक बनाई है। पोलिंक ऐसा कुछ नाम है उसका स्टार्टअप का। तो जो पॉल्यूशन का मतलब ये जो होता है ना, सारे पार्टिकल्स पॉल्यूटेड, उसके उससे लिखने के लिए इंक बनाई है। तो देर इज नो लिमिट टू योर थिंकिंग। काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज को लेकर। ओके, अभी जैसे हम कॉलेज, आपके कॉलेज में कुछ सेलिब्रेशंस होते हैं, ठीक है, तो या इन जनरल बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने कम्युनिटी में सेलिब्रेशंस होते हैं, तो मोस्टली क्या होता है कि हम प्रिपरेशन के लिए टाइम देते हैं, ठीक है। ओके, कि ये चलो ये बैनर बनाना है, ये पोस्टर बनाना है, ये ऐसा आउटफिट, ये ऐसे कटआउट आएगा। तो फॉर प्रिपेयरिंग द कॉलेज ऑल्सो गिव्स टाइम, कि चलो ये सब बनाना है, बच्चों को बनाने के लिए टाइम चाहिए। ओके, बट वंस द फंक्शन इज ओवर, व्हाट, हार्डली एनीवन थिंक्स अबाउट इट, कि वो जो भी सब है उसको या तो आप प्रॉपर डिसमेंटल कर सकते हो, पेपर प्लास्टिक मेटल अलग करके उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग में दे सकते हो एंड ऑल। सो बट ये चीजें हमारे पास दैट उसका कुछ आइडिया नहीं है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। सो आई एम गिविंग यू द आइडिया कि अगर जैसे हम प्रिपरेशन के लिए टाइम देते हैं ना, वैसे हम उसको मतलब विसर्जन के लिए भी टाइम, जैसे हम गणपति लाते हैं, सर्जन होता है उनका, मूर्तियां बनती हैं, फिर उनका विसर्जन होता है। जैसे हमारे हिंदू माइथोलॉजी में जो शंकर भगवान है, वो किसके देवता हैं? वो है ना, जैसे ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा जी वो सर्जन करते हैं, और शंकर जो है डिस्ट्रॉयर है। हाँ, तो मतलब कि वो डिस्ट्रॉय करते हैं, तो एक प्रॉपर चैनल होता है डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। जबकि हम जनरली देखते हैं, अभी देखिए 26 जनवरी का भी हम सबने फंक्शन देखा, हम सबने सेलिब्रेट भी किया होगा लोकली। तो उसकी प्रिपरेशन सब दिखाते हैं कि अरे इतना प्रिपेयर किया, ये यहाँ किया वहां किया, बट आफ्टर द फंक्शन हाउ टू डिस्ट्रॉय ऑल दीज थिंग्स, दैट इज ऑल्सो बिग टास्क, एंड उसके लिए भी टाइम देना होता है, और उसको दिखाना, उसको पॉपुलराइज करना है। तो क्या होगा कि इट विल बी इन ट्रेंड, कि हर ऐसे हर एक छोटी से छोटी स्टेपलर की पिन भी आप रीयूज कर सकते हो, अगर उसको प्रॉपरली आपने सेग्रीगेट एंड कलेक्ट किया है। कल जैसे मैंने गूंज फाउंडेशन की बात की थी, उसमें जैसे हमारे कोई भी जनरली पेपर को स्टेपल करने के लिए हम स्टेपलर पिन यूज करते हैं ना, तो वो सारे पिन्स भी वो लोग सेपरेट करके दे कलेक्ट सेपरेटली आल्सो फ्रॉम योर ऑफिस, अगर आपके ऑफिस में है। सो बस एक सिस्टम की जरूरत है, ज्यादा कुछ जरूरत नहीं है। एक सिस्टम की ये स्टेपलर का पिन है, तो वहां जो भी किसी का है वो स्टेपलर, और खाली टाइम में आप किसी को दे सकते हैं ये काम। और या तो जैसे कॉलेज में कर रहे हैं, तो आप 3 महीने में एक बार एक ऐसा एक घंटा रखिए ना, रिसाइकल आवर, लाइक दैट। तो क्या होगा कि उसमें सारे मतलब इसकी वजह से इतना सारा अवेयरनेस क्रिएट होता है ना, कि जिसका कोई मैच नहीं है।
अभी तक क्या होता है कि हमें लाइक वी आर लीस्ट बॉदर्ड, जैसे कुछ भी है तो वो फेंक देते हैं, या वो अपने आप ठीक है वो होता है ना, उसका कुछ ना कुछ हो जाएगा, दिस इज व्हाट इज अवर एटीट्यूड। लेकिन अगर जब हम खुद करते हैं ना वो चीज, तो हमें समझ आता है कि ये काफी सारी चीजें हैं जो हम इजीली कर सकते हैं, और वो अगर सेग्रीगेटेड फॉर्म में देंगे तो उसका काफी सारा रीयूज एंड उसका भी एक अलग इंडस्ट्री बन सकता है। जैसे हमने कल वो ई वेस्ट के जो प्रेजेंटेशन में देखा था ना, कि लिनियर इकोनॉमी, रिसाइकलिंग इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो सर्कुलर इकोनॉमी जो है उसके लिए ये सारी चीजें बहुत ही हेल्पफुल होंगी, कि हम किसी भी तरह की चीज को बेकार नहीं जाने देते, जो भी रिसाइकल हो सकता है वो सारी चीजें हम रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, जैसे आपके कॉलेज में कोई ऐसा फंक्शन है जिसमें कुछ खाना पीना वगैरह भी रहता है ना, जैसे फन डे या व्हाट यू कॉल इट, कल्चरल डे, कुछ इवेंट्स होते हैं ना, स्पोर्ट्स डे होता है, करेक्ट? मोस्टली सारे कॉलेजेस में इस तरह के इवेंट्स होते हैं, स्पोर्ट्स डे, कल्चरल डे, एनुअल डे। तो इसमें जो भी कमिटीज हैं, इफ यू कैन प्लान टू ऑर्गेनाइज दीज फंक्शंस एज जीरो वेस्ट फंक्शंस, ठीक है, कि जिसमें जो भी कमिटी है वो सारे इस तरह से फंक्शन करेंगे ताकि वो वेस्ट को मिनिमाइज करे, और उसको जो भी मिनिमम वेस्ट जनरेट होता है उसको प्रॉपर रिसाइकलिंग के लिए पहुंचाए। तो दैट इज कॉल्ड जीरो वेस्ट फंक्शन। तो उसमें जनरली जहां तक भी हो सकता है वो पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, क्लॉथ, वुड, ये सारी चीजें जो भी है वो मिनिमम रीयूज करके उसका मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगा। उस तरह से फंक्शन कर सकते हैं, और दिस इज अ वेरी गुड टास्क। मतलब जो भी लोग इस ऑर्गेनाइजिंग कमिटी में होंगे ना बच्चे, उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, कि दे विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट नेचर, अबाउट एनवायरनमेंट एंड अबाउट देयर ओन, कि अच्छा ये, और उनको समझ में आने लगा कि अच्छा यहाँ ये गैप है, तो ऐसा कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है कि जो हमें ऐसी सर्विसेज दे। तो उनका जो इनोवेटिव थिंकिंग है ना वो भी सेटअप बहुत अच्छे से हो जाएगा। और इसकी कमिटी में अगर आप जैसे 4 साल में जो भी आपके 3 या 4 साल का कोर्स है, उसके हर साल के कुछ कुछ बच्चे अगर ऐसी कमिटी एक बनाई जाए जो जीरो वेस्ट फंक्शंस ऑर्गेनाइज करे, एक हो सकता है, क्योंकि वो हर चीज पॉसिबल ना भी हो क्योंकि हमारे पास उतना सेटअप अभी नहीं है, लेकिन वी कैन ऑलवेज स्टार्ट विथ एनी न्यू थिंग। जैसे आपके सर ने कल बात की थी ना, कार्बन न्यूट्रल बनना है, तो उसमें यही चीज आती है कि हाउ यू कैन मिनिमाइज वेस्ट, क्योंकि रिसाइकलिंग में भी आपका कार्बन फुटप्रिंट जनरेट होता है। तो वो मिनिमाइज करने के लिए, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल देती हूँ, 26 जनवरी का हम सेलिब्रेट करते हैं, 15 अगस्त सेलिब्रेट करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में करते हैं। उसमें क्या होता है, जनरल ट्रेंड जो मैंने देखा है, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक थिंग, जनरली यही होता है ऑफिस में भी, कॉलेजेस में भी, कहीं पे भी, स्कूल्स में भी, कि कौन ऑर्गेनाइज करेगा, उसको भी इतना सारा जैसे टाइम नहीं होता है हर एक चीज के लिए, तो टेट्रा पैक्स ले आते हैं जूस के लिए, और कुछ खाने के लिए बिस्किट दे देते हैं बच्चों को, या ऐसे ही कुछ ड्राई स्नैक्स जो कि प्लास्टिक पैकेजिंग में है। अब सोचिए जितने सारे बच्चे हैं पूरे इंडिया में जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी ऑफिस में जा रहे हैं, सबके घर में इसी तरह का वेस्ट आ रहा है। मतलब दे आर जनरेटिंग दिस वेस्ट बिकॉज कि कोई टाइम लेके उसको मैनेज नहीं करना चाहता। दिस इज द मेन रीजन कि लोकली अगर किसी को बुलाया, वो टाइम होगा, उसको कौन देखेगा आया कि नहीं आया, कैसे करेंगे। तो इसी के लिए मैंने ये सजेशन दिया है कि जो कॉलेज के बच्चे हैं उनकी एक कमिटी हो स्पेसिफिकली फॉर दिस टास्क, और उसमें उनका काम है ये कि कैसे लोकल, वोकल फॉर लोकल भी आज बहुत ट्रेंड में है, तो लोकली कैसे चीजों को सोर्स किया जाए, कहाँ से किसी को ऐसे लें ताकि न्यूट्रिशियस फूड भी मिले सबको बिना वेस्ट जनरेशन, एंड वी एंजॉय आवर फेस्टिवल्स विथ जीरो वेस्ट। तो इस तरह की जब भी होगा ना, आई रिकॉल, मैंने जो बोला ना पहले एग्जाम्पल की, जब हमारी मेड टर्न अप नहीं हुई थी वॉशिंग के लिए, तो लिटरली अराउंड 200 लोगों के ऊपर का फंक्शन था वो, एंड सबने स्नैक्स वगैरह खाने के लिए स्टॉल्स थे, एंड फूड स्टॉल्स वगैरह थे, बट वी डिड नॉट जनरेट इवन 2 kg ऑफ वेस्ट आफ्टर द होल फंक्शन वॉज ओवर। तो दैट इज द पावर ऑफ जीरो वेस्ट फंक्शन। सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ी सी मेहनत एंड कोऑर्डिनेशन लगता है,
लेकिन वंस वी प्रैक्टिस, उसका जो आउटकम है ना वो बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। मीन्स और दूसरी चीज की फंक्शन होने के बाद यहाँ वहाँ स्कैटर्ड सारी चीजें नहीं मिलेंगी कि पेपर प्लेट पड़ी हुई है या चम्मच पड़ा हुआ है, ये सब चीजें देखने को नहीं मिलती। So that is the very beautiful part of it. I need a 2 minutes break, please. Yes, I'm sure. Yeah. Okay. So this kind of startups can be very useful. और कॉलेजेस में और स्कूल्स में आप और एक चीज ये कर सकते हो कि जो भी पेपर है, पेपर इज मेड फ्रॉम ट्रीज मोस्टली, तो पेपर को आप मतलब टोटली दिस कैन बी टोटली डन बाय एनीबडी इन एनी कॉलेज एंड एनी स्कूल। जो भी पेपर आइटम्स है इट शुड गेट 100% रिसाइकल। पेपर को कभी भी दूसरे वेस्ट के साथ मिक्स नहीं करें। अगर हम पेपर के लिए सेपरेट बिन रखें विच इज वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। जो भी आपके स्कूल में ऐसे बिन्स रख सकते हैं आप जो रीयूज करके आपने बनाए हो, कि पेपर जो भी है कट पेपर, मतलब काफी बार हमें ये भी पता नहीं होता है कि जो कट पेपर है ना वो रिसाइकल होता है। हम सोचते हैं कि सिर्फ बड़ा बड़ा न्यूज़पेपर जो फुल शीट्स है वही रिसाइकल होती है। नहीं, रिसाइकलिंग का बेसिक फंडा वही है कि पहले उसको छोटा छोटा किया जाता है और फिर उसको फिर से बनाया जाता है। तो एनी काइंड ऑफ कट पेपर गेट्स रिसाइकल्ड, बट द प्रॉब्लम इज जब हम कट करके उसको दूसरे वेस्ट के साथ मिक्स करते हैं तो उसको सेपरेट करना बहुत मुश्किल है, और इसी वजह से वो जनरली जाता है लैंडफिल्स में, रिसाइकल नहीं हो पाता है, जबकि ट्री से वो बना है, नेचुरल रिसोर्सेज से। तो हमें जब भी हमारे फॉरेस्ट को बचाना है, फॉरेस्ट कवर को बचाना है, तो हम हर छोटे से छोटा पेपर भी रिसाइकल करना शुरू करें। और उसके लिए बहुत इजी सेटअप है। जैसे मैंने अपने घर में एक किचन में पेपर बिन रखा है, जो वॉशिंग पाउडर का जो पैकेजिंग का डब्बा आता है ना, उसको बनाया मैंने। और एक मैंने बेटे को दिया है उसके स्टडी टेबल के साथ रखने के लिए, कि जो भी पेपर वेस्ट जनरेट होगा छोटा छोटा वो उसमें डालने के लिए। तो जस्ट वैसे ही जो भी पेपर आता है उसमें उसको एक एनवेलप में डाल के वो रद्दी पेपर के साथ मैं दे देती हूँ एंड इट गेट्स रिसाइकल। अदरवाइज अगर उसको हम रेगुलर बिन में डालेंगे, ड्राई वेस्ट बिन में, तो वो रिसाइकल छोटा छोटा जो है वो कभी नहीं होगा। और इवन उसमें कुछ और दूसरे किसी चीज का गंदा लग गया तो इट वोंट गेट रिसाइकल, क्योंकि रिसाइकलिंग इज ऑल्सो सी लाइक अ स्टार्टअप। जो भी रिसाइकल करते हैं ना वो सारे लोग भी एक स्टार्टअप ही है उनका, वो काम करते हैं। तो जिस चीज में उनको ज्यादा एफर्ट्स लगे, मेहनत लगे, लेबर कॉस्ट लगे, पानी ज्यादा लगे, वो चीज फिर वो छोड़ देते हैं ना, दे डोंट टच दैट। तो इसी तरह से जो गंदी चीज है या जो जिसमें मेहनत लगे या नीचे से उठाना पड़े, सॉर्ट करने के लिए पैसा देना पड़े, वो सब चीजें वो छोड़ देते हैं। तो इसीलिए हर कॉलेज अगर ये स्टार्ट करे कि हर ऑफिस कि पेपर बिन जो है वो हमेशा एक अलग रखना चाहिए और उसी में पेपर डालना है, तो बहुत इजीली हम पूरे इंडिया का जो भी यूज पेपर है वो सारा रिसाइकल हो जाएगा। इससे जो रिसाइकल पेपर की कॉस्ट है उसमें भी बहुत गिरावट आ जाएगी एंड हमारा जो डेली जो फॉरेस्ट कट होते हैं ना उसमें भी बहुत कम हो जाएगा वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दिस। तो इसको बहुत इजीली आप कर सकते हैं। और जैसे आपका रेगुलर कॉलेज में यूज होता है पेन्स एंड पेंसिल, पेंसिल तो बहुत कम यूज होता है बट फिर भी पेन्स यूज होता है। तो पेन्स को जैसे अभी आजकल आप लोग को पता होगा इस तरह के पेन आते हैं, ठीक है, दिस इज मेड फ्रॉम रिसाइकल्ड पेपर, ठीक है। उसका रिफिल तो फिर भी प्लास्टिक का ही आता है, वी कांट डू मच मोर इन एवरीथिंग, बट जैसे इसका ढक्कन ये सारा रिसाइकल पेपर से उसको रोल करके ये पेन बनाया है। तो इस तरह से पेन आते हैं
तो कलेक्टिवली अगर बच्चे सोचे, अगर आपने एक रिफिल कलेक्शन पॉइंट रख दिया कॉलेज में या पेन कलेक्शन पॉइंट रख दिया, तो उसको काफी सारी चीजें जो हैं वो रीयूज हो जाएंगी। आजकल बहुत सारे पेन ऐसे ही फ्री में मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, वो सभी जो है वो आप उसमें डाल के उसको रीयूज के लिए दे सकते हैं। अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजें ना कभी सॉर्ट नहीं होती है और ना रिसाइकल हो पाती है। तो उसके लिए एक सेटअप आपको सोचना पड़ेगा कॉलेज में करने के लिए, और वो बहुत इजीली सिर्फ थोड़ा सा फैसिलिटी प्रोवाइड करने से वो इजीली हो जाएगा। और आपका कॉलेज में से, जैसे मैंने कल 5 टाइप के कचरे बताए थे, वेट वेस्ट जो भी किचन का वेस्ट है उसके लिए कॉलेज में कंपोस्टर लगाया जा सकता है, कंपोस्ट बिन, या तो रोटेटिंग कंपोस्टर आते हैं, बहुत इजीली मिलते हैं आजकल। पहले तो वो भी नहीं मिलता था, कि अगर कोई करना चाहे ना तो उनको बहुत तकलीफ होती थी। नाउअडेज एवरीथिंग इज, काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट में, सो यू कैन गो फॉर दैट कंपोस्टर। तो जिससे सारा वेट वेस्ट आपके कॉलेज का आप अपने ही कैंपस में मैनेज कर सकते हैं, और उसके लिए ज्यादा जगह भी नहीं चाहिए। फिर ड्राई वेस्ट सारा जो है, जैसे मैंने बोला, पेपर शुड गो 100% इनटू रिसाइकलिंग। बाकी सारा जो प्लास्टिक, मेटल, दूसरी चीजें हैं, वो भी आप क्लीन ड्राई कंडीशन में आप एक रिसाइकलर के साथ टाइप कर सकते हैं एंड उसी को दे। और बाकी जो हैजार्डस वगैरह तो कम ही निकलता हो, और जो वॉशरूम्स है उसमें इंसिनरेटर्स लगा सकते हैं, जैसे सैनिटरी पैड्स वगैरह के लिए आजकल काफी सारे कॉलेजेस में ये लगाते भी हैं, काफी ऑफिस प्रीमाइसेस में भी लगाते हैं। तो इंसिनरेटर से वो वहीं के वहीं वो इंसिनरेट हो जाता है। तो जनरली इस तरह से आप कर सकते हैं। और स्वीपिंग डस्ट के लिए ही सिर्फ अलग एक बिन रखना है, और उसको सिर्फ वही लैंडफिल में जाएगा। और ई वेस्ट के लिए आप, जैसे कल मैंने बताया था, वो ई वेस्ट का बिन जो है वो आप अपने कॉलेज में सेटअप कर सकते हो। इवन आपके आसपास के लोग भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आपके बच्चों, मतलब स्कूल कॉलेज के बच्चे, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिलीज, everyone can utilize those e-waste bins. So we can help setting up the e-waste bin systems at your college also, and many more people can do on their own. मतलब जो CPCB का वेबसाइट है वहाँ पे जाइए, उसमें ऑथोराइज्ड रिसाइकलर्स का लिस्ट होता है, ई वेस्ट कौन रिसाइकल करता है। आपको जो नियरेस्ट रिसाइकलर है उसे कांटेक्ट कीजिए और सेटअप कीजिए एक सिस्टम। थोड़ा कोऑर्डिनेशन लगता है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, सिर्फ एक मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे ये करना है, बस। तो आपका कॉलेज बहुत इजीली जीरो वेस्ट कॉलेज बन सकता है विथ मिनिमम कार्बन फुटप्रिंट, as told by sir yesterday. So and your college has taken up initiative to arrange such a program, so that will definitely, you people are interested and you will have to do that, and you will set up an example for other colleges too, and they will get inspired with your kids, and इसी तरह से आदान प्रदान होगा, तो काफी सारी चीजें, you can spread positivity. I'm sure that will happen one day. Yes, ma'am, sure. Yeah. So now I think I have finished my startup related things. If any questions are there, we can discuss, and or any other questions are there yesterday's program related, anything we can discuss. Ma'am, can we move to the question answer session? Yes, yeah, we can move. Okay. Yeah. Shashikala ma'am. Shashikala ma'am. Yes, ma'am, I can Yes, listen. ma'am. Yeah, yes, ma'am. You can start. Thank you so much. Yeah. Thank you, ma'am, for your valuable insight on startup in waste management and environment improvement, and what are the gaps that can be bridged with the new startups. Thank you so much for providing insight on this topic. Now, I would like to request Assistant Professor Mr. Amar Verma and Assistant Professor Mr. Trimsant Bharkar sir to continue with the question answer session. Thank you, ma'am. Myself, Assistant Professor Trishant Wadkar. Very good afternoon, ma'am. Good afternoon. It was very wonderful session, ma'am. There are few questions are there into chat box. Yeah. Meena Bindal, ma'am, want to ask you that a black box, how to empty, to where and when? Okay. The black bin is for reject waste. So it is mostly consisting sweeping dust and other filter, nali,
का कचरा, ये सब चीजें उसमें होती है. So generally it doesn't get filled very soon. So you mostly you use this प्लास्टिक पैकेजिंग, बिग प्लास्टिक पैकेजिंग, जैसे कुरमुरा का पैकेट है या दूसरा कोई पैकेट है जो बड़ा प्लास्टिक है आपके पास पैकेजिंग में आया है. आई यूज दैट and I hand over it once a month to my building sweeper and ask him not to mix with other waste. उसको टाई करके देती हूँ so that it doesn't spoil other recyclable waste. इसके साथ मैं एक छोटा सा स्टोरी ऐड करना चाहती हूँ. जो ब्लैक वाला रिजेक्ट वेस्ट है ना, आप लोग को पता होगा, एक गौतम बुद्ध की एक स्टोरी है कि वो एक बार किसी गांव में गए थे, विहार करने के लिए गए थे. तो वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे. लाइक दे वर सो मच काइंड हार्टेड, बहुत अच्छे, हर तरह से बहुत अच्छे थे. तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये सब लोगों ने कितने अच्छे से उनका स्वागत किया वगैरह. और जब भी वो जाने लगे तो उन्हें ये आशीर्वाद दिया कि आप लोग सब फैल जाओ, मतलब इधर तितर बितर हो जाओ. और तो उनके शिष्यों को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है, मतलब इतने अच्छे लोगों को ऐसा आशीर्वाद दे रहे. और थोड़े दिन बाद वो दूसरे गांव में गए जहाँ के लोग एकदम खराब थे, मतलब दे वर वेरी बैड एंड बहुत ही बैड क्वालिटीज थी उनमें, कुछ भी अच्छा नहीं था. तो तभी गौतम बुद्ध ने उनको वापस निकलते समय आशीर्वाद दिया कि आप लोग इसी तरह से मिलजुल के एक साथ रहो. तो अभी तो उनके शिष्यों को लगा कि अरे ये तो कुछ तो राज है, ये पूछना पड़ेगा. ये समझ नहीं आ रहा है कि इतने बुरे लोगों को ऐसा अच्छा आशीर्वाद दे रहा है कि आप यहीं रहो, और अच्छे लोगों को बोल रहा है कि आप स्प्रेड आउट हो जाओ. तो ये वाला जो ब्लैक रिजेक्ट वेस्ट है ना, ब्लैक बिन वाला, वो मैं रिलेट करती हूँ ये बुरे लोगों के जैसा. कि तो जो शिष्यों ने पूछा गौतम बुद्ध से, तो उन्होंने बताया कि जो अच्छे लोग है ना, वो जहां पे भी जाएंगे वो अपनी अच्छाई स्प्रेड करेंगे. तो इसीलिए मैंने उनको ये आशीर्वाद दिया कि आप लोग तितर बितर हो जाओ, तो अच्छाई पूरी जगह पे दुनिया में फैले. और जो बुरे लोग हैं वो जहां जाएंगे वो अपना बुरापन ही फैलाएंगे. इसलिए मैंने उनको बोला कि आप बंध के रहो, इस तरह से एक साथ एकजुट रहो, ताकि बुराई और ना फैले. तो ये जो ब्लैक बॉक्स वाला कचरा है, दैट यू कैन इक्वेट टू दैट बुरे लोग, कि वो ऐसे हैं. ये कचरा ऐसा है कि जैसे दूध का पैकेट है, टेट्रा पैक है, कांच की बोतल है, कुछ भी जो चीज रिसाइक्लेबल है उसके ऊपर अगर धूल गिर गई, मिट्टी गिर गई, ये सारी गंदी चीजें गिर गई, तो उसको साफ करने में बहुत पानी लगेगा. और बहुत बार वो ऐसी कंडीशन में हो जाता है कि वो कोई साफ ही नहीं करता है. फिर जैसे मैंने बोला कि इट इज स्टार्टअप, तो पीपल कीप इट असाइड कि ठीक है, इसको कौन साफ करेगा, कौन इतना मेहनत करेगा, पैसा नहीं है. तो इट डजंट गेट रिसाइकल्ड. तो रिसाइक्लेबल वेस्ट जो है उसको रिसाइकलिंग होने के लिए ये वाला जो ब्लैक वाला कचरा है ना, उसको एक साथ रहना जरूरी है. तो दिस इज माय आइडियोलॉजी. आई कोरिलेट लाइक दिस. यू ऑल कैन आल्सो एक्सपेरिमेंट दिस, कि जब भी हम ये कचरा टाई करके देंगे, और अगर आपके घर में फ्रीक्वेंटली भरता है, आपका बिन कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप 15 दिन में दे सकते हो, एक हफ्ते में भी दे सकते हो, बट उसको एक यूज्ड बैग में टाई करके दें. आई नेवर परचेज एनी डस्टबिन लाइनर्स फॉर मैनेजिंग माय वेस्ट. आई never purchase any. I use only the packaging waste available, और उसी में मैं ये रिजेक्ट वेस्ट टाई करके देती हूँ. बाकी का सारा कचरा मैं किसी तरह का लाइनर यूज नहीं करती. So that way you can give. Did I answer your question? Yes, Meena Bindal ma'am, are you there? Yes, partly I can say, but exactly the solution is not there. Okay. So we will think more. Yeah, correct. So how frequently you generate that waste, and accordingly you can decide your frequency. Not frequency. We have to decide ki exactly where it has to reach, and where we have to drop. No, it will reach to landfills. The reject waste is the only waste that goes to landfill. Yeah, okay. But the person who is collecting, are they reaching at the landfill, or are they properly disposing? That is the concern. Yeah, actually, I would request all of you not to worry about what happens next. You start doing with what you feel is the correct method of sorting. See, unless there is a system established,
to reach everything to proper location. Like in this webinar, we have people from across India. So everywhere, the situation of managing waste further is different. Many places there won't be any recycling happening. I am not sure, but there are some places where no recycling is available at all. So that is also possible. So, but whoever is attending, they can start practicing this from their own homes, and then later that once many people are started following these practices, you can establish a chain of system where like collectively, जैसे एक चिड़िया अनेक चिड़िया वाली स्टोरी सुनी है ना हमने, कि सब मिलके जब करेंगे तभी ये असंभव काम भी संभव हो जाएगा. तो अभी के लिए जैसे हमारे यहाँ जिस फैसिलिटी में हम रहते हैं वहां पे ये सारी चीजें कलेक्ट होती हैं, और स्वीपर सबके घर से एक बार तो दिन में कलेक्ट करते ही हैं मोस्टली, या सब किसी के घर में ऐसा होगा कि नीचे रख के जाना पड़ता होगा. तो एट वॉट एवर वे इट इज, आप उसी रेगुलर सिस्टम में ही इसको अलग से स्प्रेड करें. देखिए आप अपना कचरा अपने घर में कितने दिन रख रहे हैं, नोबडी बॉदर्स. दैट इज ओनली योर बॉदरेशन कि आपको क्या लगता है कि कब तक आपको वो बैग भरता है और आप कब देना चाहते हो. बट दिस विल सेव अ लॉट ऑफ वाटर, this will save lot of resources if this practice is followed by all of us. So this is what. So don't bother about what the future is. उसको क्या होता होगा, वो होता होगा कि नहीं. बट वंस दे सी, देखिए जो भी सॉर्टिंग सेंटर्स होते हैं ना, उसमें इसी तरह से होता है कि दे सॉर्ट पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ये सब, और बाकी का सब जो है वो लैंडफिल में जाता है. तो छोटा छोटा कचरा है ना, वो भी सारा लैंडफिल में ही जाता है मोस्टली. So you need not worry about that. वो जो टाई करके दिया है, that will help save you, save the other recyclables from getting dirty. Thank you, ma'am. I hope Meena Binder madam is satisfied with the answer. Yes. Yeah. Okay. Anybody want to ask any question? You can directly have interaction with the ma'am. Yeah, yes, Chula ma'am, if you can provide the details about this yellow dustbin also, like definitely people are not practicing this e-waste, and like I'm staying in the building in Kharghar, where thousands of people are there in the society, but Correct. Definitely we don't have e-waste box, yellow box. Okay, yeah. So whom to contact to start this, and how they will help and they will pick up from us. Okay, as I told you, there is a website, Central Pollution Control Board, CPCB. Okay. Website, government body is there. So they have authorized a few recyclers across India to recycle e-waste. Okay. So they are authorized recyclers. So you can contact, you can get the list from the website and contact any of the nearest authorized recycler and set up the e-waste bin system. And even as you are in Mumbai, we can also help you around. Apart from that, in Mumbai, we have Sahkari Bhandar stores. People might be aware. So Sahkari Bhandar stores have tie-up with these e-waste recyclers. So in front of many Sahkari Bhandar stores in Mumbai, you will find these electronic waste bins. So there you can put the e-waste bin, your e-waste. Okay. And I will also help you with the numbers of the please. recycler. Yeah, please provide the details. Correct. Every society must have this facility, because this is a basic requirement. And actually, if we go by law, the government has made the laws that you are responsible to dispose of your e-waste to authorized recycler. It is our duty. Yes. It is by law we have to do this, but hardly anyone is aware. And we are throwing here and there, and nobody is mostly having any facility for e-waste recycling. So it is good that you have come up with this idea that you all must have this facility. Yes. So like I also started with the same. I have seen one e-waste bin, a hazardous waste bin in front of a park, and then I inquired with the number and I asked whether this can be done. So there were a lot of issues actually in coordination. But then we have started with the e-waste collection drives. So temporarily you all can do like this. So initially the recycler also may not be wanting to invest into e-waste bin installing, because they don't know how much e-waste will come.
So you can organize temporary drives where on one day, one particular day, people from all around can give e-waste in a temporary bins, and then the recycler can collect it. And later, once they know that people are giving the e-waste, they will set up the e-waste bins. Yeah, definitely. Yeah, so in all Sahakari Bhandars also you won't find this. So Yeah. any big stores in any cities, if you are staying, you can ask them to put these bins. Like in my area, I asked my nearest Sahakari Bhandar store that why don't you keep this e-waste bin in front of your store? So with my intervention and help, we could set up that permanent e-waste bin, the first e-bin in our area, and then later we could provide more than 10 e-waste bins across the colony. So that is very much helpful. So every one of you, whoever is attending this session, can do this. And this you alone cannot do. You need to have a team. So Yes. this waste management is all about ekta ki shakti. The one person cannot change anything in this waste scenario. For that, you need to have like-minded people and group of people who are working for the same cause. And Yeah, luckily, my group is with you only right now. So yeah, they yeah. may be listening all the Okay, okay, great, great. Yeah, so all of you can determine and save this issue. Like you can go through all these things and set up e-waste bins. Okay. It's Thank very you so easy. much. It's very Yeah. easy. Just you need to be determined. That's it. Yes. Thank you. Thank you. Yeah, welcome. Okay, anybody want to ask the questions? Anybody else? I would Request love all to the hear participants. anything from the young participants who were singing the songs yesterday. You don't have any doubts, any Actually, young questions? participants don't practice. That's why they don't have questions. That's true, ma'am. That's true. No. Sometimes they ask like a little bit ना उनको लगता है कि कैसे पूछें. So don't get afraid. You can easily see, unless you ask, you won't clear your doubts. मन में रहने से solution नहीं मिलेगा. And I wish all of you to start practicing all these things that I told, especially about the e-waste. And dry and wet segregation is must. So e-waste solutions, I think all of you have to have the solutions wherever you stay and wherever you work. At both places, you need to set up e-waste bins and solution for e-waste. Are you all ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, Yes, yeah. ma'am. Okay, Yes, ma'am. great, Of great. course. Yeah, very nice. Okay. Okay, I request all the participants. Anybody want to ask any question, guys? I don't हेलो think so. Ah, yes, हेलो Pranjam. सर मैं प्रणीता बोल रही हूँ. एक्चुअली क्वेश्चन तो नहीं है, डाउट मेरा, बट कल मेरा एक थोड़ा सा लेट ज्वाइन होने की वजह से थोड़ा इश्यू हुआ था. तो हमें अगर कल की और आज की अगर जो रिकॉर्डिंग अगर हमें व्हाट्सएप पे उसकी लिंक मिल जाए तो हम इसे फिर से देख सकते हैं और हम जो है काम मैम ने जो बोला वो हम काम अच्छे से कर सकते हैं. सो प्लीज़ इसकी रिकॉर्डिंग अगर हमें मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा इसके लिए. Definitely, definitely. We are recording the Yes, session. ma'am. We will definitely share the YouTube recordings with you of both the days. Yes, ma'am. Yes, Link thank will be shared with all the participants. you. Yes, thank you. Okay, anybody want to ask any question? No, sir. So I hope all of you have enjoyed the session, both the session, yesterday's session and today's session also. And thank you very much, ma'am, for your enlightening on this topic. We will definitely join with you. Thank you, Meena ma'am, also for asking some questions and enlightening all the participants. Thank you very much. Thank you so much. And I wish all of you very much good success in your lives and wish you all the best. And do join me in my YouTube and Instagram profiles with India Ki Zero Waste Saheli. I am coming with lot many new shows and many other things in which you all youngsters and all the age group people can help spread the message to a greater mass. And I wish someday this Antakshari, Sustainability Antakshari program should reach
on national TV. That is my wish, because that will change the whole scenario. This is what I feel thoroughly from deep of my heart. So someday it Sure, will ma'am, it will happen. I'm happen. very sure. It will Yeah. happen. One day it will happen. Definitely, ma'am. Definitely. Yeah. Yeah. Correct. With everyone's help. Yeah. Thank you very much, ma'am. Thank you, Okay. Assistant Professor Tusant Wadkar, for this question answer session. Now I request Assistant Professor Mrs. Poonam Gajakush to give the vote of thanks. Poonam, ma'am. Ma'am, before that, I just want to say something. One feedback link is shared in the chat box. So it is my request to all the participants to please fill the feedback form and give your valuable suggestions to us. Yeah. Thank you, Tushant sir. I'm audible to all? Yes. Yes, Sir, ma'am. please share Yes, ma'am. You are. feedback form. Yeah. Hello, sir. Okay. Please share Yes, the sir. feedback form in laptop in WhatsApp. WhatsApp. Okay, okay, sir. Definitely. WhatsApp and Telegram also, sir, we are sharing. Just give us few Okay. seconds. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Hello. Hello. Yes, ma'am. You are audible. There is no such a thing as a way when we throw anything away. It must go somewhere, and the earth is what we all have in a common. Good afternoon, one and all present for today's webinar. I am Assistant Professor Poonam Kiran Kumar Gajakosh on the behalf of Natural Cup, Kelly Societies, Science and Commerce College, Kalamboli, extending sincere thanks to our today's guest speaker, Chalu Salunki, India ki zero waste Saheli. It was a different and a very innovative session, ma'am. And the valuable thoughts you have expressed in this session, very dissimilar and the different way, will providing the sense of direction in the area of e-charkha, harmful effects of thermocol, ideas for how to set up the e-waste in the college and the yellow dustbin. In the pathway to the future, we want to do all this practice with us. Thank you so much, ma'am, for your valuable words, advice, and the guidance. We will surely practice it in all our personal and day to day life for our better future. I would like to express my sincere gratitude to our Keli management for providing such a huge manifesto to express great thoughts and the views. I also give regards to our principal, sir, Dr. D.J. Giri, sir, for his invaluable supports and providing proper direction to us all the time. Let me thank our webinar organizer team, Dr. Shilpi ma'am, head of the botany department and the convener of the Nature Club, other enthusiastic and the helping hands, come members of the Nature Club are Dr. Shashikala Prajapati ma'am, Assistant Professor Tushant Wadkar sir, Assistant Professor Amar Verma sir, technical support by Assistant Professor Poonam Gajakosh, and all those who have been exceptionally helping us towards making this webinar a successful. And at last but not the least, I thank our extremely engaging audience who enthusiastically participated in the webinar. Dear participant, you will receiving your certificates on the register email ID within a week after successfully submission of both 2 days feedback. And the second feedback links has already shared with you on the chat box, WhatsApp, and the Telegram group. As we have known that modern society will find no solution to the ecological problems unless it's take a serious look at it is in a lifestyle. So if you really want to make your lifestyle better, you have to be just follow the what the ma'am has said to us. Thank you each and one who are enthusiastically participate for today's webinar. Thank you. Over to you, Shashikala ma'am. Thank you, Poonam, ma'am. Thank you so much. Principal sir, shall we end the session? Yes, please. Thank you, Yes. Suganti. Thank you, sir. Thank you. With sir's permission, I officially declare that the session ends. Once again, thank you all the participants for your dedication towards this workshop. You will be getting your certificate shortly. Thank you so much, everyone. Thank you. Ma'am, screenshot. Yeah, just we want to take one screenshot. Everybody, please switch on your video so that we can take a screenshot for our report. Yeah, please, everyone is requested to switch on your
video. Okay, anyways, I have taken the screenshot. Yes, some more are switching on the videos. Yes. Thank you so much, everyone. Thank you. Thank you, Solanki ma'am. Thank you, sir. It was nice to see all the enthusiastic college people and your staff and students. Thank you so much for providing this We opportunity. will invite to college. Okay, sir. Do come, ma'am. Yeah, sure, sure. It would be my pleasure to see you all. Okay. Thank you so much. Ma'am, Thank you. may I know the first person name, ma'am? Hello? Somebody is Hello? yes, Can you Vardhan. hear me? Resource person name, ma'am, that is asked in the feedback. Chawla Solanki. My name is Chola. Yeah, CHU. CHU. Yesterday I filled same. Okay. Thank you. Yeah, thank you, sir. Thank you, ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Bye. Bye. Thank you, ma'am. Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you, ma'am. Bye.